Welcome in trigonometry part 43, inverse circular function. In the previous part we have discussed about inverse circular function, their properties and the results related to inverse circular functions. Now let us see some problems based on inverse circular function, so that your fundamental knowledge of inverse circular function should be clear more. So we have first discuss about these problems. Evaluate tan inverse minus 1, cot inverse minus 1, sin inverse minus root 3 by 2. Let us find the values of these. First one is you have to calculate tan inverse minus 1. Tan inverse minus 1 means it is an angle whose tan is minus 1. So let us suppose this angle is theta. So if you are writing tan inverse minus 1 equal to theta, means theta should be taken as a principal value of tan inverse. So in case of tan inverse x, your theta, your theta lies between minus pi by 2 to plus pi by 2. You have read this. This should be the range of theta. If you take theta in this range, minus pi by 2 and plus pi by 2, that will be the principal value of inverse function, tan inverse. Okay. So tan inverse minus 1 equal to theta, it means we have to take theta between minus pi by 2 and plus pi by 2. Then automatically that theta will come as a principal value. See. So if tan inverse minus 1 equal to theta, this implies tan theta is minus 1. Tan theta is minus 1, this can be written as minus 1. 1 is tan 45 degree, pi by 4. Okay. Now see one thing which is the most important of this chapter. Tan minus pi by 4. Minus tan pi by 4. Just a minute. Minus tan pi by 4. ये है ना यहाँ. Minus tan pi by 4 can be written as tan minus pi by 4, because tan minus theta is minus tan theta. In minus pi by 4 is the angle in fourth quadrant, and fourth quadrant value of tan is negative, so it will be minus tan pi by 4. So minus tan pi by 4 can be written as tan minus pi by 4. Also see, tan minus tan pi by 4 can also be written as tan pi minus pi by 4, is not it? Tan 180 minus theta minus tan theta. In case of 180 there will be no change, and pi minus something means it is in second quadrant. In second quadrant also tan is negative, so tan pi minus pi by 4 is also minus pi by 4. Minus tan pi by 4 can be written as tan minus pi by 4. Also you can write tan pi minus pi by 4. तो which one will we write here? इसमें से कौन सा लिखेंगे? दोनों ही तो हो सकता है. You have to see your angle should come in this range. The angle which will come in this range, that we will write, because that will be numerically smallest and principal value. Minus pi by 4 is coming in this range. Okay. But this, it is 4 pi minus pi, 3 pi by 4. 3 pi by 4 means 135 degree.
it is not coming in this range, it is going beyond pi by 2. So we will not consider this, we consider this. We write it 10 minus pi by 4. Understood? Why we have taken this, why not this? Because we have to see this interval. Then only it will gives you the principal value or numerically smallest value, and that will be considered as an answer. So what will be theta then? Minus pi by 4. Tan theta equal to 10 minus pi by 4, so theta will be minus pi by 4 is the answer. Let us see the other way also. There is another way, that tan theta equal to minus 1. So we take first magnitude of this. Magnitude of this is 1, and for that we can write 10 pi by 4, and therefore your theta is coming pi by 4. Okay, and actually it was tan theta equal to minus 1, but tan is negative in second quadrant and fourth quadrant. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया थीटा, बट tan थीटा इज माइनस 1, सो योर एंगल शुड बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो इट कैन बी टेकन एज पाई प्लस थीटा, एंड इफ इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट वी टेक इट 2 पाई माइनस थीटा. तो हियर tan theta is negative, so we take second quadrant. So in second quadrant what will be the angle? Pi minus pi by 4, is not it? And fourth quadrant means 2 pi minus pi by 4. ये आपका एंगल हो जाएगा, क्योंकि tan theta minus 1 था. ठीक है, so this implies theta will come, ये कितना होगा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, एंड सेकेंड वन इज 8 पाई माइनस पाई, 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4. But this is in second quadrant, this is in fourth quadrant. So if angle lies in third and fourth quadrant, then we take clockwise rotation. वो प्रिंसिपल वैल्यू में बताए थे ना कि अगर आपका एंगल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तब तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, माने वो एंगल वही रह जाएगा. इफ योर एंगल कम्स इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वी टेक क्लॉकवाइज रोटेशन, एंड इन ऑर्डर टू गेट क्लॉकवाइज एंगल इसको 2 पाई घटा देते हैं. ये आपका ये 7 पाई बाई 4 ऐसे आया एंगल. दिस इज योर 7 पाई बाई 4. तो इसके लिए, इस एंगल के लिए हम लोग इधर से लेंगे ये वाला एंगल, और ये होगा उसमें से 2 पाई माइनस कर देंगे. ये जो 7 पाई बाई 4 है ना, उसमें से आप माइनस कर देंगे 2 पाई, तो ये एंगल आ जाएगा. तो ये आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 4, एंड ये 7 पाई माइनस 8 पाई माइनस पाई बाई 4. दीज आर द 2 एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 360. हमेशा 0 डिग्री और 360 के बीच में 2 वैल्यू आएगा, तो हमारा ये हो जाएगा दोनों. तो उसमें से न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट दिस है ना, देयरफॉर थीटा विल बी टेकन एज माइनस पाई बाई 4 बिकॉज इज द न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट. देखिए यहाँ भी वही आया था. तो ऐसे करके आप उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप ये रेंज देख लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू इसी रेंज में होगा. थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में ले लीजिए, तो भी आपका वही आएगा सेम. आई होप you have understand what does it mean to take in this range or to find its principal value. Both are same. Okay, let us see second problem. So in in inverse function you have read its domain and range, so better you should remember the range and you must take the angle
in that range. Let us see one more problem. Second one is cot inverse minus 1. Here also let this be equal to theta. If you are taking this equal to theta, you have to see the range of theta. थीटा का क्या रेंज है? cot इनवर्स x में थीटा का वैल्यू, ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझ के इसको याद रखना पड़ेगा. देन थीटा शुड बी बिटवीन 0 एंड पाई. 0 और पाई के बीच में जो एंगल आ जाएगा वो आपका आंसर होगा. ओके, फ्रॉम हियर cot theta will be minus 1. So minus cot pi by 4. Cot minus cot pi by 4 can be taken as cot minus pi by 4. Yes, but minus pi by 4 not coming in this range. इसको भी अब समझ लीजिए और एक बार. Here minus cot pi by 4 can be written as cot minus pi by 4. cot minus theta minus cot theta होता है. cot minus cot pi by 4 can be written as cot pi minus pi by 4. दोनों ही हो सकता है. cot pi minus theta minus cot theta. Both are true, but here which one will be considered? You have to see this. Theta should be between 0 and pi. This is not coming between 0 and pi. This is less than pi. So we will consider here this. 3 pi by 4. We write cot three pi by 4. So theta equal to 3 pi by 4 will be the answer. Is the smallest value, numerically smallest value whose cot is minus 1. So 3 pi by 4 will be the answer. No need to go here and there. I hope you have understand the thing. Let us see one more. या फिर ऐसे करके निकालते प्रिंसिपल वैल्यू तो भी आता है. Okay, third one, let sin inverse minus रूट 3 by 2. इसको थीटा ले लेते हैं. तो थीटा ले रहे हैं तो थीटा का वैल्यू लेना पड़ेगा माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस पाई बाई 2 के बीच में, क्योंकि ये साइन इनवर्स का ये रेंज होता है. So let us see. Sin theta equal to minus root 3 by 2. So minus root 3 by 2 is sin 60 degree, pi by 3. So see here, minus sin pi by 3 can be written as sin pi plus pi by 3. ये लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा. ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव. बट इफ यू राइट पाई प्लस पाई बाई 3 इट विल नॉट कम इन दिस रेंज. ये इस रेंज में नहीं आएगा. तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये नहीं लिख के हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस पाई बाई 3. साइन माइनस थीटा भी होता है माइनस साइन थीटा. सो हियर वी प्रिफर दिस. सो theta equal to minus pi by 3 will be the answer. I hope you have understand how to solve this type of problems. Now let us see few more problem. कुछ और बनाएंगे प्रॉब्लम इसमें.
Let us see next problem. Evaluate question number 2. You should note down these problems and you should solve one by one. After solving these problems, you can easily solve any problem of your book. Tan inverse minus root 3. इससे आपको सारा बेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप अपने से बना सकेंगे. प्लस cos inverse minus root 3 by 2. Let us consider this question. Sine within bracket tan inverse minus root 3 plus cos inverse minus root 3 by 2. In order to get its value, we find separately its value, and then by substituting we find its value. So first of all, to find tan inverse minus root 3, let us find this, and for that let tan inverse minus root 3 equal to suppose theta. And if you are taking tan inverse minus root 3 equal to theta, then you must take theta more than minus pi by 2 and less than pi by 2, because this is the range for tan inverse function. I think you have understand. So you have to take tan theta equal to minus root 3, means minus root 3 means tan 60 degree, pi by 3. So now we want theta in this range, so we write tan minus pi by 3. Tan minus theta is minus tan theta. So you will get theta. Theta means, what is theta? This is taken as theta. So this will be equal to minus pi by 3. This is the value of tan inverse minus 1. Now to find cos inverse minus root 3 by 2, let us find this. For this also, let cot inverse minus root 3 by 2 equal to theta, and if you are writing theta, you have to take theta between 0 and pi, because this is the range of cot inverse function. Sorry, cos it is, okay. Sorry, it is cos inverse, cos. And what is the range for cos inverse? बस इसमें ये होता है, cos inverse में और equal भी होता है ना. तो in case of cos inverse x, your range is 0 to pi. 0 and pi both are included. So cos theta will be minus root 3 by 2 equal to minus root 3 by 2. Root 3 by 2 means cos 30 degree. So we write cos pi by 6. Pi by 6 is your 30 degree. Now you have to see in this range, theta should be taken between 0 and pi. So what will you write? Cos pi minus pi by 6. Cos pi minus theta is minus cos theta. So minus cos theta can be written as cos pi minus theta, means cos pi minus pi by 6. So it will be cos 6 pi minus pi, 7 pi, 6 pi minus pi, 5 pi, 5 pi by 6. So theta means
cos inverse minus root 3 by 2 will be 5 pi by 6. Take it equation number 2. Now you will write from 1 and 2. From 1 and 2. What is sine tan inverse minus root 3 plus cos inverse minus root 3 by 2 equal to sine, what is this, minus pi by 3 plus what is this, 5 pi by 6. So it will be sine LCM 6, here it is minus 2 pi plus 5 pi, so 3 pi, ये होगा ना माइनस 2 पाई प्लस 5 पाई, कितना होगा 3 पाई. So this will gives you sin pi by 2, sin 90 degree. 1 will be the answer. Let me see its answer. What is there? Yes, answer is okay. So I hope you have understand this. One more problem see in this part. एक और प्रॉब्लम लीजिए इसमें, इवेलुएट, दिस इज थर्ड नंबर. इवेलुएट नंबर 1, साइन इनवर्स ब्रैकेट sin 2 pi by 3. Yeah. Second is sin inverse sin 10. Not degree, only 10. Let us see what does it mean and what will you do. Come for this. Number 1, sin inverse sin 2 pi by 3. Whatever this may be, it is sin inverse, so it will be an angle. Okay, so if this is an angle, then this angle should be between minus pi by 2 and plus pi by 2. देखिए हम लोग ये पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तब तो इसको आप लिख देते साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3, बट 2 पाई बाई 3 विल नॉट कम इन दिस रेंज. तब तो फिर ये सवाल का कुछ मतलब ही नहीं रहा. साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 अगर लिख देते आंसर नहीं. 2 pi by 3 is not coming in this range, so this will not be the answer. Here you will write sin theta equal to this, then sin 2 pi by 3, but this 2 pi by 3 is not coming in this range, minus pi by 2 to plus pi by 2, so we have to write this angle in this range. How? Sin theta can be written as sin pi minus theta. Sin pi minus theta होता है sin theta.
sin pi minus theta is sin theta. So sin theta can be written as sin pi minus theta. So if you are writing in this way, now it is coming sin 3 pi minus 2 pi, pi by 3. Now this pi by 3 is in this range. So theta equal to, therefore theta means sin inverse sin 2 pi by 3. This is equal to pi by 3 is the answer in this way. Second, sin inverse sin 10. What is this 10? Number given. So if number given, you should convert it into radian. जरा यहाँ देख लीजिए, ये 22/7 को अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है पाई. पाई इज एन इरेशनल नंबर. इट्स वैल्यू is not this 22/7. 22/7 is just approx value of pi. पाई का तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, 3.17 करके ये इन्फिनिटी तक चलता है. पाई कैन नॉट बी रिटन एज ए फ्रैक्शन, इट इज एन इरेशनल नंबर, बट वी टेक इट्स अप्रॉक्स वैल्यू. फॉर इजियर कैलकुलेशन वी टेक अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई 22/7. Okay, so here we take approx 22/7 equal to pi, so 1 equal to 7 pi by 27 22, ये होगा 1 equal to, so what will be 10 equal to then 70 pi by 22. एक में हो जाएगा 7 pi by 22, so 10 equal to into 10 70 pi by 22. So we write it sin inverse sin 70 pi by 22. Yes, and you will write here let equal to theta. Okay, so sin theta will be sin 70 pi by 22. 70 pi by 22. But you have to see, is it coming in this range? Here also the same range will be followed. Minus pi by 2 to pi by 2. In this range your theta should be. ये देखिए तो pi by 2 है, नहीं ये तो pi से बड़ा है, 70 by 22 है. It is more than 2 pi. This is not coming in this range. So you have to bring this in this range. वो कैसे आएगा? इसको जरा देखिए. Can you write 3 pi minus 70 pi by 22? जरा देखिए यहाँ मेरा what does it mean 3 pi? Pi 2 pi 3 pi. 3 pi means it is same as pi. So 3 pi minus theta means it is same as pi minus theta. 3 pi and pi are same. Sin 3 pi minus 70 pi by 22 will be same as sin pi minus 70 pi by 22. समझे? क्योंकि 3 पाई और पाई तो सेम है. देखिए घूम के वहीं आएगा, पाई यहाँ तक, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई यहीं आगे. ये क्या है? अरे ये तो क्या है, 90 है ये. नो देखिए ये हुआ पाई 2 पाई 3 पाई कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक ना, यहाँ तक आ जाएगा ना. फिर मीन्स 3 पाई इज सेम एज
पाई, फिर से समझिए, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया पाई, एक राउंड कंप्लीट हो गया 2 पाई, 3 पाई माने फिर पाई पर आ जाएगा ये, है ना। सो साइन 3 पाई माइनस 70 पाई बाई 22 कैन बी रिटर्न एज साइन पाई माइनस 70 पाई बाई 22, बोथ आर सेम। और साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन पाई माइनस 10। इसको आप ऐसा लिख लीजिए, पहले एक बार आप लिख लीजिए ये, चलिए अब ठीक है, ये साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, इट इज ऑल राइट, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज साइन पाई कैन बी रिटर्न एज 3 पाई माइनस 70 पाई बाई 22। Why? Because we want to bring the angle in this range. देखिए तो आता है कि नहीं। Now what will be? ये हो गया 66 पाई माइनस 70 पाई, 66 पाई माइनस 70 पाई मीन्स माइनस 4 पाई, माइनस 4 पाई बाई 22, not it. This can be written as sine cut it by 2 pi by 11, okay, let it be sine minus 2 pi by 11 minus 2 pi by 11 is coming in this range। ये पाई बाई 2 से तो बड़ा हो गया ना, माइनस पाई बाई 2 से, ये माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है और पाई बाई 2 से तो छोटा है ही, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। सो दिस एंगल इज कमिंग इन दिस रेंज एंड देयरफॉर योर थीटा विल बी माइनस 2 पाई बाई 11 एज ए आंसर। लेट्स सी व्हाट आंसर इज देयर, माइनस 2 पाई बाई 11, ओके, आंसर इज ओके। So I think you have understand how can we solve this type of problems, okay. So in this video keep this much. In next video, part 44, we solve few more important problems based on this your inverse circular function. Thank you for watching.